Good morning, class 8. Myself Ranjit Kumar. I welcome you all in the e-learning program of Modern English School, Kunti Nagar, Nevada. This is the fourth video lecture of the chapter Reproduction in Animal. Today we are going to see fertilization. Definition you all know already, it has been discussed. Fertilization, fusion of gametes, means fusion of sperm with ova to form zygote, is called fertilization. Fertilization is of two types: internal fertilization and external fertilization. Internal fertilization, if fusion of the sperm take place inside the female's body, then it is means fusion of sperm and ova take place inside the female's body, then it is called internal fertilization. And if fusion of sperm and ova take place outside the female's body, it is called external fertilization. It is already being discussed. I have provided video for this particular fertilization. In today's video we are going to discuss some means how this happens. So what is fertilization? During mating, with the help of penis, male discharge semen or sperm in the vagina of female. So during mating, sperm or semen, you know what is difference between sperm and semen? Sperm means the cells, and when it get mixed with the seminal fluid, it is called semen. So during mating, semen is released inside the vagina. This sperm has to travel all the way through cervix, through uterus to the fallopian tube. So sperm has to swim. That's why they are very good swimmers. And next thing, one more thing I have told you. Every month, either of the ovary, either this one or this one. I have not drawn that one because drawing already been provided. So either of the ovary will release one ova, and this releasing of ova, the release of ovum from ovary is called ovulation. What is ovulation? The release of ovum from the ovary is called ovulation. So every month ovulation take place, but only any one of the ovary will release ova. This process of releasing ova is called ovulation. So ovulation is means ova is here or egg is here. Sperm has to swim all the way from vagina through cervix, through uterus, through fallopian tube. It comes here and it get fused, means this is the egg and this is the sperm, and this sperm will, there is a acrosome, one enzyme is there in the top of this acrosome. It will penetrate inside the egg and it will release the nucleus. So the zygote will be formed. So the first cell formed will be zygote. So what is zygote? It is the cell formed after fertilization. So I can write this way also. It is the cell formed after fusion of sperm and ova. So the cell formed after fusion of sperm and ova is called zygote. So you same thing, if I am saying fertilization means definitely it is fusion of sperm and ova. So this zygote is formed. For example, this is the zygote. This zygote undergo
रिपीटेड डिवीजन, ये बार बार डिवाइड होने लगेगा, मीन्स one cell will divide to form two cell, then after some time these cell divide to form one cell and this cell divide to form one cell, so four cell. After some time means one cell will change into two cell, it will change into four cell, it will change into 8 cells. Like this it will keep on dividing. So this continuous division will result into a cell, means a ball of cell with hundreds of cell, means लाखों हजारों सेल हो जाएंगे, एक सेल 2 में, 2 सेल 4 में, 4 8 में, 8 16 में, 16 32 में, 32 64 में, इसी प्रकार ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करना शुरू कर देंगे। और डिवाइड होने के साथ साथ ये मूव करने लगते हैं फ्रॉम हियर टुवर्ड्स द यूटेरस। सो दिस बॉल, दिस जाइगोट undergo division and continuous division and it start moving towards the uterus. Actually the cell is not moving. In the wall of the uterus there is cilia, a special type of cell that do movement like this. So due to this movement, this cilia, a finger-like projection present in the walls of the fallopian tube, will push the developing zygote towards the uterus. Okay, so next thing what I am saying, so after division and it is moving towards the uterus, now it have a bundle of cell, means a ball of cell, and in that ball of cells start taking different groups, so start dividing in the groups, and each group of the cell will form different tissue and different organ. So this stage is called embryo. So here it is called zygote. After zygote start continuous division and it start moving towards the uterus, and I have told you to repeated division it forms a bundle of a ball of cell. That ball of cell is called embryo. So what is embryo? Embryo, the developing स्ट्रक्चर, ये डेवलप कर रहा है ना, एक सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8, सो डेवलपिंग स्ट्रक्चर इन विच सेल बिगिन टू फॉर्म, cells begin to form groups that will develop into different tissue and organs in the body is called embryo. See, one more way is to define embryo. You can easily say early developing structure is called embryo. For example, a lady become pregnant, for example, on 5th of this month. Now, early 3rd month means from 5 to 5 1 month, then 5 to 5 2 month, and early next 5th after means after completion of 2 month, early 1st 3rd month means तीसरे महीना का शुरुआती समय में जो स्थिति होता है सेल का, मीन्स इस एम्ब्रियो का, उसको कहते हैं, मीन्स उस डेवलपिंग स्ट्रक्चर को कहते हैं एम्ब्रियो। मीन्स अर्ली डेवलपिंग स्ट्रक्चर ऑफ द
बेबी इज कॉल्ड एम्ब्रियो। आप इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं, बट अगर आप ऐसे डिफाइन करना चाहें तो भी ठीक है। उसमें क्या कह रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जाइगोट डिवाइड होकर एम्ब्रियो बन रहा है। तो एम्ब्रियो किसको कह रहे हैं? जैसे 1 से 2 सेल हुआ, 2 से 10, 10 से 1000, 1000 से 1500, सेल का संख्या बढ़ रहा है। बट एक समय आता है जिस समय सेल जो होते हैं ग्रुप में डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं एम्ब्रियो। सो द डेवलपिंग स्ट्रक्चर इन विच सेल बिगिन टू फॉर्म ग्रुप्स दैट विल डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन्स इन द बॉडी इज कॉल्ड एम्ब्रियो। सो embryo has reached here and it is made up of thousands of cell, बहुत सारे सेल के बने हुए हैं। This embryo get embedded means ये embryo यूटेरस के वाल में धस जाएगा, means it will get attached to the walls of uterus and obtain nutrient from the uterine wall, मीन्स ब्लड वेसल ऑफ द यूटेराइन वॉल। हम क्या कह रहे हैं? दिस डेवलपिंग एम्ब्रियो गेट इम्बेडेड इन द वॉल्स ऑफ यूटेरस एंड ऑब्टेन्ड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ब्लड वेसल इन द यूटेराइन वॉल। यूटेरस में जो वॉल्स होते हैं, उस वॉल में जो, वो भी तो लिविंग है, तो उसमें भी ब्लड वेसल्स होंगे। उसी ब्लड वेसल से ये अटैच्ड हो जाएगा और न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करेगा मदर के बॉडी के थ्रू। दिस प्रोसेस ऑफ एम्बेडिंग इन द वॉल्स ऑफ द यूटेरस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। सो द embedding of embryo in the wall of the uterus is called implantation. So this embryo get embedded in the walls of uterus. ये यूटेरस के वाल में ये धस जाएगा और अटैच हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन। वन मोर टर्म यू हैव टू नो, दैट इज कॉल्ड fetus. See, just now I told you in early third month के पहले जो जैसे जाइगोट है, जाइगोट फर्स्ट डे था, डिवाइड करते करते ये 3rd मंथ तक पहुंचा। 3rd मंथ के अर्ली स्टेज तक इसको एम्ब्रियो कहेंगे, और 3rd मंथ के बाद इसको फीटस कहेंगे। मींस 3rd मंथ के स्टार्टिंग में इसको एम्ब्रियो कहेंगे, और एट द मिडिल ऑफ द 3rd मंथ उसको फीटस कहने लगेंगे। तो एक डेफिनेशन होना चाहिए, क्या है फीटस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्ब्रियो एंड फीटस। हम एम्ब्रियो में क्या बोले आपको, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट विल डेवलप इनटू टिश्यू और ऑर्गन। बट फीटस का डेफिनेशन अगर हम तुमको देना चाहे, then I will say it is a stage of developing embryo in which different body part of the developing baby can be identified. हम कह रहे हैं फीटस वो भी बॉल ऑफ सेल है, मीन्स वो भी बहुत सारे सेल का बना हुआ है, और एम्ब्रियो भी बॉल ऑफ सेल है। बट फीटस और एम्ब्रियो में बस 10-15 दिन का अंतर है, जो हम बताए आपको। अर्ली 3rd मंथ में हम इसको एम्ब्रियो कहेंगे, और जैसे ही वो स्टेज क्रॉस करेगा इसको हम लोग फीटस कहेंगे, स्पेशली इन ह्यूमन केस। आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बॉडी, ओके। सो व्हाट इज फीटस? द स्टेज ऑफ द embryo in which all the body parts can be
identified is called fetus. Okay, so in today's video we have seen what is ovulation. Release of ovum is called ovulation. What is fertilization? Fusion of sperm and ova is called fertilization. Where this fertilization take place is in human being, it take place inside the fallopian tube. If we are saying it is taking place inside the fallopian tube, then definitely it is a internal fertilization. After fertilization, the first cell formed is called zygote. This zygote undergo repeated division and start moving towards the uterus from the end of the fallopian tube. And this developing ball of cell in which the cells start forming group that will later develop into tissue and different organs is called embryo. When this embryo or this developing embryo is called fetus, when different part of the baby can be identified, then it is called fetus. And the process of embedding of the developing embryo in the walls of the uterus is called implantation. implantation क्यों important है, हम बार बार बोल रहे हैं. जब बेबी डेवलप करने लगेगा तो वो मदर के उम्ब में है, तो वो खुद से सांस नहीं ले रहा है, वो खुद से भोजन नहीं ले रहा है, तो उसको भी तो एनर्जी चाहिए. तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? इसीलिए कहा जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर has to double its diet, because she is not only taking food for herself, she is also taking food for the baby. So the baby will obtain nutrient from the mother's body, and as we know, after digestion the nutrient is absorbed and it is circulating in the blood. And since the baby is connected to the uterine wall of the mother's womb, so it get connected to the blood vessel, and from the blood vessel it will start obtaining nutrients. Okay, and that blood vessel also help the baby to release unwanted or toxic substance that develop in the baby's body. So implantation is very important, because जब तक इम्प्लांटेशन नहीं होगा तब तक बेबी को न्यूट्रिएंट मिलना और न्यूट्रिशन मिलना मुश्किल हो जाता है. सो होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक फर्टिलाइजेशन. बुक को पढ़िए, यूट्यूब देख सकते हैं तो देखिए, और इन कुछ टर्म को थोड़ा सा देख लीजिए. हम बस आपको कह रहे हैं कि एक बार जस्ट गो थ्रू द बुक, रीड इट प्रॉपरली. स्टिल इफ एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क. ओके, थैंक यू.